My dear students of second year, I am Pratap, and again I am here with some of the other contents of first unit, which is fundamentals of communication. Okay, so we will discuss some of the other contents in it today with the maximum understanding as much as I can in both the languages, because I am getting really very much good feedback of using this method. Is that clear? Still, if something remains untouched or unexplained in both the languages, please leave your comments. मैं कोशिश करूंगा मैं दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करूं एक्सप्लेनेशन में, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज अपने कमेंट्स को छोड़ें वीडियो के अंदर सो दैट मैं उसका जवाब दे पाऊं. ओके, सो द टॉपिक which is which is with us now which is with us now, that is to know about the importance of reading comprehension. हम यहाँ जानने वाले हैं reading comprehension की क्या महत्ता है. What is its importance? Okay, let's know about the importance of reading comprehension one by one. The first thing, reading comprehension skills separates the passive unskilled reader from the active reader. What these two things are: passive reader and active reader. Now, passive readers are those who are just reading without grasping much from it. Is that clear? Passive readers are those, I am explaining this thing. Passive unskilled readers are those who are just reading without getting much from the text. But active readers are those who not only just reading, they are comprehending properly, means where they are making all the doubts clear which are coming to their minds. So this is the first importance. It separates a passive reader from an active reader. Passive reader को active reader से separate करता है, means it has reading comprehension makes a person more like active reader. Is that clear? This is the first importance. Second one is skilled readers don't just read, they interact with the text. As I explained to you, with the active readers, yes, this is a reality. Active readers are those who interact with the text. Who interact with the text means they read and create some doubts over the text which they read, and they answer that. They try to get the answer from the text. This is the interaction which they regularly do while reading and a comprehension. Is that clear? This is the second thing. Third importance is all about interaction helps reader. Interaction helps reader with the text to open blocked thoughts and ideology. Now think I want to have everyone's of your sight in one direction. Don't you think we as an individual develop some different thoughts, ideologies, logics in our mind? Yes or no? Yes, absolutely. There are only two ways. मैं ध्यान से सुनेगा मैं क्या कह रहा हूं. I am explaining this thing. Third one, interaction helps reader with the text to open blocked thoughts and ideology. I am explaining this blocked thoughts and ideology. Think logically. If you have a concept in your mind, any idea, any thought which has a logic as per you only, means the logic which you think that's a logic, you have only two ways to change that. आपके पास सिर्फ दो ही तरीके हैं उस थॉट, उस लॉजिक, उस आइडियोलॉजी को चेंज करने के. फर्स्ट वन इज व्हेन यू आर लिसनिंग समवन प्रॉपरली, मींस व्हेन यू वांट टू लिसन पीपल विद their thoughts and ideology, then only you can change your thoughts if you find those incorrect. And second thing, when you read the thoughts of others which are opposite to your previous thoughts, या फिर आप किसी को पढ़ रहे हैं. So yes, reading comprehension too is a way to change your blocked thoughts and ideology while reading, with reading and comprehension exercise or activity or task. Is that clear? So this too helps to change the blocked thoughts and ideology. Next importance is it helps to relate all mentioned thoughts with your understanding.
Again, I'm saying it helps to relate all mentioned thoughts with your understanding. When you read and comprehend, it helps you out to relate. Just 1 second, everyone. I'm just taking a sip of water. Sorry. Yes. when when you read and comprehend, it helps you out to relate with the thoughts which someone wrote with your understanding. Is that clear? Please do one thing. I'm explaining this point further. If you are reading a text after completing, after completing means after reading and comprehend it, you will develop some different understanding and give the same text to someone else. You will find some different changes. You cannot expect him means you cannot expect others to have the same ideologies after reading that. This is all about the importance of this thing. जब आप किसी भी थॉट को पढ़ते हैं, किसी के लिखे हुए, जब आप कभी भी किसी के लिखे हुए थॉट को पढ़ते हैं, उस समय आप उसे अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक समझते हैं. You cannot say that the same understanding will be there with another reader. Is that clear? This is the importance of the reading and comprehension. The last thing is, which is there as importance of reading comprehension, it pushes you out to the next level. This is all about the development. This is all about the development of your mind, the expansion of your thoughts. As much you read and comprehend, as much you read and comprehend, as much you feel yourself to be upgraded, to be the part of next level. So these were some of the importance of comprehension with reading. Is that clear? Let's move on to know something else. What happens when a reader is really very much skilled? What he can do, what he can perform differently. This is the next heading for us to understand. So what skilled readers are able to do, skilled reader क्या कर सकते हैं, this is actually the next topic for us to understand. क्या क्या कर सकते हैं. So one by one we will understand these all things. Skilled readers are able to predict, जिसको मैंने पहले भी बताया था, predict is all about something जिसको आप भविष्यवाणी करना कहते हैं. Means you can guess something, you can say something with a confirmation. Skilled reader are able to predict what will happen next in a story using some clues presented in the text. जो हम text को पढ़ते हैं, when we read a text, we get some clues. कुछ उसमें संकेत मिलते हैं. Clues means some ideas which you get to know about while reading. With the help of all those clues, you can get to know, you can predict what will happen next into the story or what will be the end of a story. क्या मैं गलत हूं? After having a scene of a movie, you can predict whether this actor will die after being shot by the gun or not. हम ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं यदि किसी भी कैरेक्टर, मूवी में किसी कैरेक्टर को गोली लगी है कि वो गोली लगने के बाद जिंदा रहेगा या नहीं, because of some clues are being presented while shooting or while writing something. This is the first thing which skilled reader are able to do. Second thing is create questions about the main idea, message or plot of a text. Skilled readers are able to make, able to frame, able to ask some of the questions based on the text, message or anything whatever he is reading or comprehending. He is reading with a comprehension. He will be able to create some of the questions based on the text. Is that clear? This is the second thing which a skilled reader can do. Third thing, he can monitor understanding with respect to the sequence, context and character. Monitor understanding means quite easily he can understand the sequence which is used by the writer. The context means with what regard something is written, and the usage of or placing of the character as well. So skilled readers are able to monitor these all quite easily. This too is able to
this too is be done by the skilled reader. Next thing is skilled reader skilled readers are able to clarify different parts of the text which have confusion in relation to the other thoughts presented. This we all do know, ये हम अच्छी तरह जानते हैं. Extremely sorry, actually I just went on with the English explanation. I forgot to like clear that in Hindi, so extremely sorry for that thing. So clarify different parts of the text with which have confusion in relation to the thoughts presented. ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं. A text which is written, a plot of a story which is written, or a story or a book which is written, that will not be having only one thought. वो सिर्फ एक thought के साथ नहीं होगी. Yes or no? Absolutely. When there are multiple thoughts of the people, where there are multiple thoughts given by the writer as well, there skilled readers are able to remove, able to rectify the confusion which he is getting in between, and can understand that quite easily. So this is the thing which skilled readers are able to do, able to clarify all the doubts, all the confusions which are coming out with because of the different thoughts which writer presented. जो writer ने अलग अलग thoughts को use करने की कोशिश किया या present किया है, उन सभी के यूसेज की वजह से जो कंफ्यूजन आया है, उस कंफ्यूजन को बहुत आसानी से स्किल्ड रीडर क्लैरिफाई कर लेते हैं. एंड द लास्ट थिंग इज कनेक्ट द इवेंट इन द टेक्स्ट टू द प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. स्किल्ड रीडर जब भी कभी किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, व्हेनेवर दे रीड समथिंग, दे ऑलवेज relate something what they are reading with the previous understanding and knowledge they have. हर एक स्किल्ड रीडर अपनी प्रीवियस नॉलेज को बहुत आसानी से यूज करता है पढ़ने के दौरान, मींस रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन करने के दौरान. इज दैट क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच स्किल्ड रीडर्स आर एबल टू डू क्वाइट easily. And probably this is the last slide for reading or comprehension. This is all about with strategies for reading comprehension skills. क्या मुख्य तरीके, क्या मुख्य चीजें. स्ट्रैटेजीज का हिंदी रूपांतरण होता है वैसे रणनीतियां, मींस ऐसी नीतियां जो आप बना रहे हैं युद्ध संबंधी. हालांकि स्ट्रैटेजीज को साधारण नीति के तौर पर भी माना जा सकता है. सो स्ट्रैटेजीज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, क्या आपको तरीके, स्ट्रैटेजीज मींस नीतियां अपनानी चाहिए ताकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा कर पाए, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं. सो लेट्स गो थ्रू दीज ऑल स्ट्रैटेजीज फॉर गुड एंड बेटर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके, वन बाय वन. The first one is as a strategy, it helps to activate and connect with prior knowledge. ये as a strategy है reading comprehension की. When you are reading or comprehending, again I'm saying when you are reading or comprehending, you need to activate, you need to connect the reading material, reading message with the previous knowledge, with the previous means with the prior knowledge you have as a skill, as a intelligent person, as a person of knowledge. यदि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है you have some knowledge of that subject or the knowledge of your own life. In that case you need to like activate as well as connect that prior knowledge while reading, because यदि आप ऐसा करते हैं तो comprehension बहुत better हो जाता है. Second thing is as a strategy, it is very much must for the reading or a comprehension skill. You need to set a purpose. If you are not setting up a purpose for the reading, you cannot say that you will be able to do that with the perfection. When you have a set purpose, you will be able to read and comprehend better. The third strategy is concept development. Concept development means till the time you don't have a concept in your mind before the reading or while reading a text. दोनों चीजें कह रहा हूं. जब तक कि आप एक कॉन्सेप्ट मींस एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अपने दिमाग में नहीं रखते पढ़ने से पहले या पढ़ने के दौरान, दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट है. At both places this is important. Before the reading or while reading, you are not developing actually a concept into your mind. You won't be able to do the reading or a comprehension things better. Is that clear? Next thing is vocabulary learning with relation to the usage. ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं. We know this thing very much well that
all the words which we have as synonym to a word. दोबारा कह रहा हूं, कोई भी शब्द जो हमारे पास एज अ सिनोनिम, एज अ पर्यायवाची किसी शब्द के होते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू यूज ऑल दोज सिनोनिम एवरीवेयर एज द मेन वर्ड. जो एक मुख्य शब्द के सिनोनिम आपने फाइंड आउट किए हैं, हर एक सिनोनिम कैन नॉट बी यूज्ड बाय यू एग्जैक्टली एज द मेन वर्ड. उस मुख्य शब्द जो आपने सिनोनिम के तौर पे ढूंढने की, जिसके सिनोनिम के तौर पे आपने शब्द ढूंढने की कोशिश की है, हर सिनोनिम वाला वर्ड आप हर जगह यूज नहीं कर सकते उस वर्ड के रिलेशन में. इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक यू नीड टू नो, you need to find this with the text, where vocabulary learning which is used by the writer with respect to its usage. Okay, so this is all about a kind of strategies which gives you better understanding, better comprehension, which gives you better comprehension. Okay, so this is all about with relation to the vocabulary and its usage. Next one is retelling to register. When you are reading and want to do very much better comprehension, please have this strategies in your mind. If you have a habit, to retell that, when you have a habit to retell that means आप उसे दोबारा किसी को बता रहे हैं. retelling, when you are retelling that thing to someone, to anyone, it will help you out to register much better the concept, much better the comprehension of that text. Is that clear? बहुत आसानी से वो आप ज्यादा गहराई से सस्टेन कर पाएंगे उस अंडरस्टैंडिंग को, उस कॉम्प्रिहेंशन को. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, focus on the text structure. You need to like focus and understand the structure of the text. जैसा कि हमने strategies में भी पढ़ा था, we went through some of the strategies as where it is very much must to have the idea, have the concentration on the structure which a writer used to write down something. You need to have your sight on the structure. So that too is very much important, to have your focus on all the different ways of structuring something. Okay, this depends on the writers. Basically this depends on the writers, what kind of a writer, what kind of a expertness they have into structure something. Is that clear? Last two things about the strategies: encourage and support rereading. This is very much important to highlight for every one of you. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी को ब्रीफ करना. Encourage and support rereading. If something is not clear while reading, either that's a passage or that's a complete paragraph. Sorry, either that's a passage or that's a complete page. Do not find yourself uncomfortable to reread that. यदि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा पैराग्राफ या पूरा का पूरा पेज जो आपने पढ़ा है समझ में नहीं आया है, nothing is wrong to reread that. ये गलत नहीं है बल्कि ये बहुत अच्छा है. This is really very much good as a strategy to do better comprehension while reading. So encourage yourself and support rereading if you are not clear with something. And the last thing is asking and answering question. This too is a strategies. If you really want to do better reading with comprehension, you want to do better reading with comprehension, you need to frame some questions as well as to answer those all. Is that clear? So these are some of the ways, these are some of the techniques, these are some of the strategies which people can use to do better reading and comprehension. Is that clear? Let's move ahead to understand some of the other contents of the same unit. This is technical writing with respect to the sentence and paragraph. The heading is technical writing with respect to the sentence and paragraph. यहाँ पर बहुत सी चीजें मैंने लिखी हैं for your better understanding, but some definitions, some explanations I didn't write. Reason being, I will explain those all for you verbally, and it is must, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप इस चीज़ पर फोकस करें. That doesn't mean something which I didn't write that you will not understand. Is that clear? You need to focus on the sound. You need to focus on the way I'm using to explain that. Is that clear? Let's go through this.
डू वी नो व्हाट सेंटेंस इज? क्या हम जानते हैं सेंटेंस क्या है? यस एब्सोल्युटली, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बोला जाता है. सो व्हाट सेंटेंस इज, यहां पर ओल्ड डेफिनेशन के तौर पर मैंने लिखा हुआ है, बिकॉज I want every one of you to answer this to yourself. Please take some seconds or a minute to pause the videos and answer to yourself what is the old definition of sentence. मैं आप लोगों को बता देता हूं. Just take a pause for 1 second. लेके चलते हैं यहां पर पुरानी डेफिनेशन को. If I'm not wrong, all of you must have defined it in such a way, a combination of words, दोबारा बोल रहा हूं, a combination of words which gives a sense is called sentence. एक ऐसा शब्दों का समूह जो अरेंज किए गए हैं इस तरीके से कि वो कुछ मतलब निकालें, कुछ सेंस दें, कुछ जानकारी दें, तो वो सेंटेंस कहलाता है. यस और नो? एब्सोल्युटली. इसको एक और दूसरे तरीके से, इन अ न्यू वे, ये हमारी ओल्डेस्ट डेफिनेशन है, इसको थोड़े से नए तरीके से भी लिखने की कोशिश की है, सो दैट यू कैन मेक द डेफिनेशन, मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेंटेंस अ बिट डीपर. इट इज अ रिटन कॉम्पोजिशन. ये ऐसा लिखने का कॉम्पोजिशन है. ये स्पोकन कॉम्पोजिशन भी आप बोल सकते हैं, लेकिन सेंटेंस लिखने में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. सो इट इज अ रिटन कॉम्पोजिशन कंसिस्टिंग अ पर्टिकुलर थॉट expressed by the author और स्पीकर. एक ऐसा रिटन कंपोजिशन जो रखता है किसी थॉट को, जो किसी राइटर ने या बोलने वाले ने एक्सप्रेस किया है इन अ प्री डिफाइंड वे ऑफ फॉर्मेशन. प्री डिफाइंड वे ऑफ फॉर्मेशन का मतलब यहां पर यह है, वी ऑल डू नो, without the assistance, without following some of the rules of a language, we cannot frame the sentence. Sentence को फॉर्म करने के कुछ रूल्स होते हैं, we are supposed to follow, we are supposed to be very much strict with all those rules. Is that clear? So this is all about the predefined way of now formation. Okay, लेके चलते हैं. Do we really very much in need of these sentences? Yes, absolutely. You cannot like keep yourself away from the sentences in your personal as well as in your professional life. आप अपने आप को दूर ही नहीं कर सकते. So effective use of sentences are required for technical writing such as emails, business letters, memos, reports, proposals, etc. Lot many things are there. बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सेंटेंसेस का यूज किया जाता है और वो टेक्निकल राइटिंग का हिस्सा बनते हैं. आगे लेके चलते हैं. इफ द सेंटेंस इज डिस्कस्ड, इट इज मस्ट टू डिस्कस द फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. ये भी जरूरी है कि हम फ्रेजेस और क्लॉजेस को भी डिस्कस करें. सो प्लीज गिव अ पॉज टू दिस वीडियो. एक पॉज दीजिएगा वीडियो को और अपने आप को एक्सप्लेन कीजिएगा व्हाट फ्रेज एंड क्लॉज आर. Okay, so all of you must have like explained to yourself what phrases and clauses are. अब मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं. phrases, जो डेफिनेशन हमने यहां पे ओल्डेस्ट डेफिनेशन लेके चले थे सेंटेंस की, वही डेफिनेशन हम फ्रेज एंड क्लॉज के लिए लेके चलेंगे, so that you can be better understandable. You can better understand this in simplest way. Okay, in the simplest way. The first one is phrase, a combination of words. एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो शब्दों का है, a combination of words which gives you a sense, जो आपको सेंस देता है बट नॉट द कंप्लीट सेंस. मगर पूरी तरह सेंस नहीं देता, आधा सेंस देता है. मींस यू कैन नॉट रिलेट द सेंस स्पेसिफिकली विद वन थिंग. इट अलाउज यू टू रिलेट द सेंस एवरीवेयर विद एनीथिंग, विद एवरीबडी. दैट इज फ्रेज. और क्लॉजेस की बात जो करते हैं, क्लॉजेस आर एग्जैक्टली लाइक अ सेंटेंस. क्लॉजेस एग्जैक्टली सेंटेंसेस की तरह होते हैं. All the clauses have the same formation as subject and predicate. Same formation होता है, subject भी होता है इसमें, predicate भी होता है. But one thing, because of we cannot call a clause a sentence. It never ever has the independency to be placed. यदि ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो क्लॉज बोले ही नहीं जाएंगे. मेरी बात क्लियर है? यदि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये बोले ही नहीं जाएंगे क्लॉजेस, ये सेंटेंस बोले जाएंगे. सो क्लॉजेस आर दोज व्हिच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ few words which gives us the complete sense, but while remains the part of a bigger sentence. While remains the part of a bigger sentence, एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होते हुए ही
ये हमको पूरा सेंस देते हैं. So this is all about the phrase and clause. Is that clear to everyone? Okay, very well. Whenever I'm asking, जब भी कभी मैं सवाल पूछ रहा हूं, is that clear? So please be interactive with the video. मेरा पूछने का कारण यही है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव हो पाएं मेरी वीडियो के साथ. ओके, एज मच यू विल बी इंटरेक्टिव, एज मोर यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड something which I am showing and explaining verbally. Is that clear? Okay, let's move ahead to understand some of the different kinds of sentences. यहां पे मैं different kinds of sentences को अलग अलग point of view से categorize करूंगा. दोबारा बोल रहा हूं, here I would categorize the different kinds of sentences with respect to different point of views. Is that clear? So first one is we are going to know some of the kinds of sentences with expressional point of views. जहां पर expression means दर्शाने वाला point of view आता है, उसके लिहाज से हम sentences को जानने की कोशिश करते हैं. This is that way where English or Hindi language were taught to you in the schools. These all different types came into the existence for you first time. ये आपके सामने पहली बार तब आए थे जब हिंदी या इंग्लिश आपको समझाई गई थी भाषा के तौर पर. ओके, व्हेन द ग्रामर ऑफ हिंदी और इंग्लिश वर टॉट टू यू. ये हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं. सो वी आर गोइंग टू टेक द इंग्लिश फॉर्मेशन so that we can move ahead to know sentence and paragraph with respect to the technical writing better. Okay, so first one is declarative. Declarative means when you have something to declare. जब आप किसी चीज को declare करते हैं, when you have a statement, when you call a statement, that is declarative. जब आप declare करते हैं, आप सभी को याद होगा, if I'm not wrong, all of you do have the remembrance, when you declare something, that can be in affirmative as well as in negative way. Negative वो negative में भी हो सकता है और affirmative में भी हो सकता है. Like I am Raghvendra Pratap Singh. Okay, I am Raghvendra Pratap Singh. This is an affirmative way. But if I'm saying I am not Rudra Pratap Singh, so this too is a declarative sentence. This too is a declarative sentence because again I am declaring. Again I am declaring that I am not Rudra. I am Raghvendra. Is that clear? The second kind is interrogative. Interrogative means where you are framing such a sentence which needs an answer. एक ऐसा सेंटेंस बना रहे हैं जिसका जवाब, जिसके लिए एक सेंटेंस का और उदय होता है. Means when you frame an interrogative sentence, you are actually driving another sentence to be in picture as an answer. Is that clear? Third one is exclamatory. Exclamatory means anything which comes from your mind suddenly and with a strong emotions, बहुत ज्यादा strong emotions के साथ, और अचानक कुछ बाहर आता है in a form of a sentence, that is exclamatory sentences, जो अचानक कुछ कहा गया है. And next one is, ये बहुत से लोगों को पता होगा, ज्यादातर सारे ही पता होंगे वैसे तो, imperative sentence. Imperative sentence means where the sentences shows an order, command, request, entreaty. That is imperative sentence. वो sentences जहां command means आदेश, order means आज्ञा, request means प्रार्थना show की जाती हैं, वो imperative sentences बोले जाते हैं. The last one is optative. Optative too is a kind of a formation which were taught to you. कुछ convent schools में ये type नहीं बताया जाता क्योंकि ये टाइप पहले कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता था. If you will go through all those English books, English means English grammatical books, old English grammatical books, you will get to know about only for these types of sentences. You will not get optative as a part of a sentence, optative as a kind of a sentence. Okay, but later on it was added to a kind of a sentence as which shows a wish of a person, जो एक wish show करता है, which he wants to be done, जो वो चाहता है वो हो, but दूसरे की तरफ से, means by the supreme power. Okay, so these were some of the
काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस विद एक्सप्रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। आगे लेके चलते हैं, जो हमारा बेसिक मोटिव है यहां पर आज एज सेंटेंस एंड पैराग्राफ, वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विद स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। मींस किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने में जो उसका स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, द वे वी यूज एज पर द स्ट्रक्चर विच इज अप्रोप्रिएटली फिक्स्ड, अप्रोप्रिएटली रूल्ड बाय सम ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर, उसको स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सो देयर आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज पर द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हिच आर सिंपल सेंटेंसेस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दीज ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एज वेल। यदि मैं गलत नहीं हूं, आप सभी ने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सुने होंगे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स्ड सेंटेंसेस। हो सकता है आपने ये वाला लास्ट वाला ना सुना हो, मैं साधारण भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। Simple sentences which are framed as per the least grammatical structural rule, as per the least grammatical structural rule of English language. Simple sentences जो साधारण है। Second one is compound, और यदि मैं गलत नहीं हूं, compound is all about something where you are adding something to, जहां पर दो अलग अलग sentences एक साथ आते हैं, चाहे वो डिपेंडेंसी के साथ आए, इंडिपेंडेंसी के साथ आए। हालांकि कंपाउंड सेंटेंसेस हमेशा इंडिपेंडेंसी की वजह से बोले जाते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस, दोज डिफरेंट सेंटेंसेस व्हिच आर कमिंग टुगेदर टू क्लियर द अंडरस्टैंडिंग डिफरेंटली। both of the sentences are not dependent to one another, that is compound. अगला लेके चलते हैं कॉम्प्लेक्स, which are a bit difficult, difficult and typical because there is a dependency of the sentences on one another. वहां पर complex sentences में dependency होती है एक दूसरे के ऊपर, that's why इनको complex means थोड़ा सा typical माना जाता है। And the last one is mixed sentences, जहां पर इन सभी sentences का mixture है। okay, so आगे लेके चलते हैं all these different simple sentences, compound sentences and complex sentences separately one by one. सबसे पहले लेके चलते हैं simple sentences. The least way, the easiest rule of grammar to frame a sentence, to combine some words together to make a sense clear, is actually simple sentence. So for oral communication, the most important thing is to master in structuring the simple sentence. माना यह जाता है कि यदि आप oral communication में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, you must be very much you should be the master to structure simple sentence. So in our day-to-day speech we may use many different kinds of simple sentences. हम बहुत तरीके के simple sentences use करते हैं। वहां पर कुछ sentences के types मैं बताने वाला हूं। Here I am going to let everyone of you know some of the different types of sentences as well under simple sentence. पहला one word sentence, दूसरा टू वर्ड सेंटेंस, और तीसरा थ्री और मोर वर्ड सेंटेंस। इज दैट क्लियर? मैंने आपको पहले ही हाईलाइट कर दिया है। वन बाय वन लेके चलते हैं। अब एक बात छोटी सी यदि मैं यहां कहता हूं तो आप सभी के दिमाग में डाउट आएगा, सी हाउ इट इज पॉसिबल टू कॉल अ वर्ड अ कंप्लीट सेंटेंस। कैसे पॉसिबल है कि एक शब्द को एक सेंटेंस बोल दिया जाए? जहां हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, वेयर वी डू नो दिस थिंग वेरी मच वेल इफेक्टिवली, दैट at least two things must be there in a formation of a sentence as per the least rule of grammar. ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट छोटे रूल के तहत भी दो शब्दों का होना किसी भी एक सेंटेंस में जरूरी है। दैट इज द सब्जेक्ट एंड द एक्शनरी वर्ब परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना जरूरी है, तभी वो सेंटेंस बोला जाता है। सो हाउ इट इज पॉसिबल टू कॉल अ वर्ड अ कंप्लीट सेंटेंस? एक शब्द को हम पूरा का पूरा सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं? मैं बताता हूं हाउ। एक्चुअली व्हाट सेंटेंसेस आर व्हेन दोस क्लियर्स द सेंस। हाँ या ना? Yes, absolutely, a combination of words which gives you a complete sense. हमने यही definition बात करी थी। And as per the least grammar rule, it is must to have a subject in that as well as the action verb. Yes or no? Okay. So, यदि कोई भी एक ऐसा शब्द जो आपके सेंस को पूरा करता है, जो आपके किसी भी पूछे हुए जवाब को
पूर्ण मतलब निकालता है, दैट बिकम्स अ सेंटेंस. लेकिन वो ग्रामेटिकली सेंटेंस नहीं है. प्लीज डू नॉट स्टिक योरसेल्फ विद दिस थिंग व्हेन समवन इज सेइंग इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ सेंटेंस विद वन वर्ड सेंटेंसेस सिर्फ उनको बोला जाएगा जो आपके सेंस को पूरा कर देते हैं. इज दैट क्लियर? लाइक सपोज फॉर एन एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं. ये कई तरीके के वन वर्ड सेंटेंसेस अलग अलग सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं. दोबारा बोल रहा हूं, one word sentences are used at different situations which we face, which we get in our life. Okay, वो हो सकते हैं exclamation में, imperative sentences में, vocative में, non exclamation usage में. जहां पर नॉन एक्सक्लेमेशन यूसेज है, जहां पर सडनली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ नहीं है, नॉर्मल है, यू आर वेरी मच नॉर्मल. लेके चलते हैं सबसे पहला एक्सक्लेमेशन. डोंट यू थिंक इफ यू आर सेइंग समथिंग, if you're expressing your if you're expressing your gratitude towards someone, यदि आप अपना ग्रेटिट्यूड, किसी ने आपकी मदद की है और आप उसका ग्रेटिट्यूड किसी को चुका रहे हैं, किसी को दे रहे हैं उस चीज का ग्रेटिट्यूड, तो आप एक सिर्फ शब्द बोलते हैं, थैंक्स. yes or no? So don't you think the action which someone performed for you, the action which someone performed for you, किसी भी व्यक्ति ने जो आपके लिए एक्शन परफॉर्म किया, because of you are saying thanks, this thanks is really with complete sense? Yes or no? Absolutely, that is real. 100% this thanks is a complete senseful sentence, but not grammatically. यदि आपने किसी काम को किया, if you performed a action, if you performed an action और सामने वाले ने उसको कंसीडर किया गुड, बेस्ट, बेटर, so don't you think if he or she is saying good, so आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आपके एक्शन के अगेंस्ट मिल गई. मीन्स द एक्शन विच यू परफॉर्म, यू गेट द रिक्वायर्ड एक्शन विच यू वर एक्सपेक्टिंग, सॉरी, यू गेट द रिक्वायर्ड citation which you were expecting. So these all are exclamation one word sentences as thanks, good, fine, hey. आगे लेके चलते हैं. when the situations are imperatives like stop. When you are ordering someone, the stop guides people. This stop, only one word, guides people to stop all the actions then and there. Yes or no? If you're saying someone to go, don't you think he will go then and there? Yes, absolutely. So go is just one word, but it is with complete sense. That's why these all words are called sentence. Is that clear? So stop, go, march, look, etc. lot many things. आगे लेके चलते हैं vocative. Vocative means when you are addressing the people. When you are addressing the people. So addressing people in a group or a meeting as gentlemen. जैसे ही आप जेंटलमैन बोल देंगे, जैसे ही आप कंट्रीमैन बोलेंगे, जैसे आप फ्रेंड्स बोलेंगे, जैसे आप कोलीग्स बोलेंगे, डोंट यू थिंक पीपल विल फोकस ऑन यू? These all one words will get the attention of them all. ये उन सभी लोगों की जो आपको सुनने के लिए आए हैं, बोलते ही आपकी तरफ अपना अटेंशन देंगे. yes or no? So vocative cases में भी one word sentences होते हैं, but not grammatically these are one word sentences. And non exclamation, when you are responding to someone, yes, no, true, perhaps, certainly. Do you know this that suppose for an example, do you have a dictionary? If I'm asking, do you have a dictionary? You are saying yes. You are not suddenly yes. You will not say in such a loudness, in such a sudden with such a sudden reaction. You will just say yes. Later on, if you want to like make this complete sentence, yes, I have a dictionary, but yes is sufficient enough. Yes or no, to make me understand. So this is all about non-exclamation. Yes, no, true, perhaps, certainly, sure, etc. So these all are non-exclamation situations where we can frame one word sentences. आगे लेके चलते हैं. These are some of the examples like ma'am, I have completed the assignment. Teacher, good. यदि ये पूरा सेंटेंस आपने फ्रेम किया, मैम आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, आप टीचर का गुड इज सफिशिएंट एनफ. दिस इज वन वर्ड सेंटेंस बिकॉज इट इज मेकिंग यू क्लियर द सेंस. ऐसा क्लियर? आगे लेके चलते हैं. वन वर्ड के बाद टू वर्ड सेंटेंसेस आते हैं विच आर अप्रोप्रिएटली ग्रेट विद द फॉर्मेशन ऑफ with the usage of grammar rule as well as without the use of a grammar. Like for an example,
टू वर्ड सेंटेंसेस को लेके चलते हैं. फर्स्ट वन इज ऑल अबव मेंशन, जितना भी ऊपर मेंशनड है. जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक स्लाइड पीछे कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं. ओके, एक्सक्लेमेशन सिचुएशंस में यदि आप थैंक्स बोलते हैं तब वन वर्ड होता है, यदि थैंक यू बोलते हैं तो टू वर्ड सेंटेंस होता है. इज दैट क्लियर? गुड यदि आप बोलते हैं तो वन वर्ड सेंटेंस होता है. वेरी गुड बोलते हैं तो टू वर्ड सेंटेंस होता है. एक्सक्लेमेशन. इंपेरेटिव, स्टॉप देयर, यदि आप स्टॉप देयर बोलते हैं तो टू वर्ड होता है. स्टॉप बोलते हैं तो वन वर्ड होता है. गो देयर, यदि आप गो बोलते हैं तो वन वर्ड सेंटेंस होता है. इफ यू आर सेइंग गो देयर, इट्स अ टू वर्ड सेंटेंस. सो ऑल द सिचुएशंस व्हिच आर गिवन एज वन वर्ड अबव can be framed as two words like hurry up, look up, drive slow, well done, very well, very likely, etc. Lot many things are there. Second चीज आती है intransitive verbs. Use of intransitive verbs. With the use of intransitive verbs, we frame two word sentences. ये proper grammar rules के according है. अब यहाँ पे छोटी सी अंडरस्टैंडिंग ऐड करना चाहूंगा आप सभी के दिमागों में. इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव, याद रखिएगा ये दो अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, इंट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव. Transitive verbs are those. Transitive, ध्यान रखना, transitive जैसा मैं बोल रहा हूं is exactly in the same way you people need to pronounce. Transitive and intransitive. Transitive verbs are those where the action is passing to an object. Is that clear? Where there is a essentiality to have an object at the end, where the action can be end, like I kick a football. So football is must to add at the end. If you say I kick, this is not looking appropriate. This is not seems to be a complete sentence. ये पूरा सेंस नहीं दे पा रहा. तो ये ग्रामर के रूल्स के होने के बाद भी when there is a subject as well as there is a verb, it is not a complete sentence. Grammar के rules के according. So it is an essentiality to have an object at the end. Okay, those are transitive verbs. Intransitive verbs where there isn't any need of any object, जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है. where the action of a verb never ever ends on an object, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एंड्स होता है वो इंट्रांसिटिव होगी. तो इंट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में ही बात कर रहे हैं फॉर द टू वर्ड सेंटेंसेस. So sentences of intransitive verbs can be of two words such as water flows, rain falls, and he swims, etc. Lot many things. Okay, lot many different ways to frame the different sentences. आगे लेके चलते हैं some expressions of transitive. कुछ ऐसे expressions होते हैं जैसा कि मैंने अभी बोला, transitive verbs always carry, always demand, always need objects. हमेशा डिमांड करते हैं. लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जहां पर there isn't any need to have any object at the end even when the verb is transitive. Is that clear? So some expressions of transitive, like for an example, he is coming home tonight. If you are saying this sentence, he is coming home tonight, I know is a incomplete sentence, but because a sentence is already spoken by someone, एक सेंटेंस पहले ही कहा जा चुका है, इसी वजह से I know is sufficient enough even when no is an transitive verb. No intransitive verb है, लेकिन फिर भी सेकंड सेंटेंस को जानने की कोशिश करते हैं. Let's understand with the help of the second sentence. He has lost a lot of money in the stock exchange. He has lost a lot of money in the stock exchange. If you are getting the responses as asi, means आप जानते हैं, you know that very much well. So you know asi is an incomplete sentence है. लेकिन ध्यान से देखिएगा, because one sentence is already spoken by someone, that's why this incomplete sentence is considered to be very much senseful. इसी वजह से सी ट्रांजिटिव होने के बावजूद यहां पर पूरा सेंस दे रहा है. Let's move on to the third one. Simple sentence of the three or more words means we are going to know some of the sentences which requires three or more words. पहला लेके चलते हैं all the sentences. इसमें भी कई categories हैं जिनको हम जानेंगे one by one. All the sentences of transitive verbs have the pattern of subject, verb and object, where as per the grammar you are supposed to have an object so that he or she, means that subject can perform some action in a form of a verb, as well as there is an essentiality of a
object, either with a transitive verb or without the transitive verb. Okay, so let's move ahead. He likes the novels. वो novels पसंद करता है. He laughed yesterday. वो उसने इसे कल छोड़ दिया. He likes novels. He left yesterday. These are some of the sentences जहां पर 3 words का यूज किया गया है. आगे लेके चलते हैं sentences of intransitive verbs. याद रखिएगा intransitive जहां पर there isn't any essentiality, there isn't any need of what object. Sentence of intransitive verbs may take complement. Complement means एक complement, supportive way to say, in addition to. Okay, let's understand this. He served his internship. This is a way to frame a sentence. लेकिन just hold on. Okay, extremely sorry for the small pause. Actually, there was an urgent call for me. Okay, let's understand this one. Sentence of intransitive verbs may take complement. Complement means as a support to something. So here is a sentence, and do not consider something which is written in the bracket. He served his internship. This sentence is really complete. Nothing is wrong with it. He served his internship as well as he took a great risk. दोनों sentences complete हैं. There isn't any need anything to add. But if you are referring something which clarifies, you are mentioning something at the end which clarifies what type of internship and where the internship was at IBM. So he served his internship at IBM. It directly shows the complement to the object. This is the object, his internship object, and this at IBM is coming as a complement to this internship. Now in the second sentence, he took a great risk. उसने बहुत ज़्यादा risk लिया in buying the share. So in buying the share is a complement to this object risk. Is that clear? This is all about the sentence of intransitive verbs may take complements to have more words into it. Okay, चलिए आगे लेके चलते हैं. The third one is sentences with adjuncts. यहां पर एक बात बहुत आसानी से क्लियर करना चाहूंगा. डू नॉट गेट कंफ्यूज. adjuncts का मतलब होता है, यहां पर भी लिखा और यहां पर भी लिखा है, समथिंग एडेड टू अ थिंग बट नॉट एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट. बहुत जरूरी पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी ऐड किया जा रहा है. As an adjective आप इसे समझ सकते हैं. A kind of an adjective. Words or phrases added to qualify or modify other words in a sentence are called adjuncts. कोई भी ऐसा शब्द जो किसी भी वर्ड को क्वालिफाई करे, उसकी क्वालिटीज को बताए as exactly as adverb, तो जब आप उसे जोड़ते हैं तो वो adjuncts बोले जाते हैं. वो नाउन भी होते हैं, adjective भी होते हैं, adverbial adjuncts भी होते हैं, और ये तीनों हमने आगे मेंशन भी किए हैं. We explain these all three differently. आगे लेके चलते हैं one by one. Noun in apposition phrases. क्या मैं गलत हूं? मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बहुत लोग जानते होंगे. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो मेजर ध्यानचंद जी, हु वाज नोन एज वेरी मच ग्रेट प्लेयर ऑफ हॉकी. So whenever you will find his name there in an article, in a book, in anywhere, whenever you will find his name written, this name always comes with these two nouns. Hockey legend late Major Dhyanchand. यदि वो लेट नहीं होते, मीन्स यदि वो उनका स्वर्गवास नहीं हुआ होता, तो वो कहलाते थे हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद. Is that clear? So these two words are really not necessary. ये जरूरी नहीं है, लेकिन because of the usage of these two, आप कोशिश कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर करने की. So this two is a way to show, to add some extra words to make your sentence with more and more words. एक ऐसा सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं एडजंक्ट्स का यूज करके जिसमें दो या दो से ज्यादा, जिनमें तीन या तीन से ज्यादा शब्द हैं. इज दैट क्लियर? दूसरा लेके चलते हैं एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स एज एडजंक्ट्स, जहां पर एडजेक्टिव आ रहा है एडजंक्ट्स के तौर पे. ओके, व्हेन एन एडजेक्टिव qualifies a noun or a pronoun at a place of a subject or object, जहां पर उसकी जरूरत नहीं है और है भी नहीं है,
without the use of that adjective adjuncts, you can frame the sentence. But if you're using, you want to add something to it. To it means to a noun or a pronoun. Like for an example, a great king, महान राजा, supports the subject first. यदि आप a king supports the subject first बोलें, एक राजा अपनी प्रजा का हमेशा साथ देता है, अपनी प्रजा को हमेशा सपोर्ट करता है, मदद करता है. सो क्या वो गलत होगा? नो, नॉट एट ऑल. बट अ किंग सपोर्ट्स द सब्जेक्ट बोलने की जगह यदि आप बोलते हैं अ ग्रेट किंग सपोर्ट्स द सब्जेक्ट, दिस इज जस्ट अ एडजेक्टिव वर्ड which you are adding before the king to show the use of adjuncts as adjective. Is that clear? Third one is adverbial adjuncts, जहां पर ऐसा शब्द यूज किया जा रहा है जो वर्ब की क्वालिटी को बढ़ा रहा है. सो ये वर्ब की क्वालिटी को वो बढ़ा सकता है क्योंकि एडवर्ब है. ये किसी दूसरे एडवर्ब की एडजेक्टिव की क्वालिटी को भी बढ़ा सकता है और किसी अनदर एडवर्ब की क्वालिटी को भी बढ़ा सकता है. बिकॉज वी ऑल डू नो एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स व्हिच modifies the meaning of a verb, adjectives और adverbs. ये तीनों जगह आ सकते हैं. यहां पर एक एग्जांपल यह है, the sun rises in the east. Will that be wrong to say? It's the universal truth. ये सार्वभौमिक सत्य है. We cannot ignore. The sun rises in the east. लेकिन यदि rises से पहले आप always जोड़ देते हैं, this is an adjective, this is an adverb which is giving the indication to the people, means without a miss ऐसा हो ही नहीं सकता. So sun always rises in the east. This always is not necessary but used as an adverbial adjunct to the verb rises. Is that clear? The sun always rises in the east. So this is the use of adverbial adjunct. आगे लेके चलते हैं adverb in pairs. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर्स में आते हैं एंड एज वी नो पेयर में है तो नंबर ऑफ वर्ड्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं. सो इफ यू आर यूजिंग सच वर्ड्स व्हिच आर एडवर्ब एंड used in the sentences, automatically you are extending the number of words in the formation of your sentence which you are framing. Yes or no? Absolutely. So adverbs in pair. He comes here now and then. Yes, he comes here now and then. Yes, आता रहता है वो. And he is walking up and down. He is walking up and down means yes, you are showing the action of someone up and down. Up and down means regularly. Yes or no? So these were some of the ways to explain, ways to know the simple sentences. छोटा लगता है लेकिन बहुत ज्यादा है. Okay? आगे लेके चलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस. जैसा मैंने बोला था, कंपाउंड सेंटेंसेस आर those sentences which are joined by one another but without having any dependency नहीं है, independency है. So all sentences consist of two or more equal. All compound sentences consist of two or more equal and independent clauses. Equal means वैल्यू में बराबर, independent means किसी के ऊपर आधारित ना हो. Clauses and have related ideas, और उनके जो आइडियाज हैं दोनों सेंटेंसेस के एक दूसरे से कहीं रिलेट करते हैं, दोज आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस. और इनको जोड़ने के कई अलग अलग तरीके हैं. इफ यू वांट टू लाइक जॉइन two sentences to call them clauses as well as call the complete structure as compound with the help of the conjunction, with the help of adverb or with the help of without any conjunction or adverb. यहां पर मैं बता रहा हूं कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जहां पर आप दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जहां पर जोड़ते ही वो क्लॉज बोले जाते हैं और कंप्लीट सेंटेंस जो बन रहा है वो कुछ रिलेटेड आइडियाज के साथ जोड़े गए हैं और एक दूसरे के साथ उनकी डिपेंडेंसी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आधारित नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की कैटेगरी में आ जाते हैं. ओके, तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की कैटेगरी में आने के साथ साथ जब उनको जोड़ा गया है, कंपाउंड बनाया गया है, सो वो कंजंक्शन की मदद से जोड़े जा सकते हैं, कंजंक्शन एडवर्ब्स की मदद से जोड़े जा सकते हैं एंड विदाउट एनी कंजंक्शन और एडवर्ब भी जोड़े जा सकते हैं. इनके कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं. फर्स्ट वन इज सेंटेंसेस जॉइंड बाय कंजंक्शन. कंजंक्शन आप अच्छी तरह जानते हैं, एंड, एज, बट, आइदर और, नाइदर और, एक्सेट्रा, लॉट मेनी. पहला लेके चलते हैं, आई सॉ हिम एज ही वाज गेटिंग ऑफ द बस. मैंने उसे देखा वह बस से उतर रहा था. He was getting off the bus. He was getting off the bus is a separate sentence. I saw him. ऐसा नहीं है मैंने जब देखा तभी वो उसे उतरने की प्रेरणा मिली. He was getting off the bus only when I saw him.
Is that clear? So I saw him is a separate independent sentence, independent clause, as well as he was getting off the bus is an independent clause, and with the help of an as, it is joined with one another, means these two are joined with one another. He is hardworking and honest person, वो बहुत ज्यादा hardworking and honest, but is slow in dealing with the customer. यदि मैं यहाँ पर बोलूँ he is slow in dealing with the customer, will that be not right to make the sentence? Yes, this is an independent sentence. This is an independent, completely independent sentence. But this too is an independent sentence. Both the sentences are independent, but showing a relative idea, a related idea. इस वजह से ये compound sentences बनता है. Third one is I really need to go to work. मैं जाना चाहता हूँ, but I am too sick to drive. लेकिन मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ. I am too sick to drive. मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मैं जाना चाहता हूँ. I really need to go to work. So दोनों ही related हैं, but दोनों independent हैं. ये नहीं कह सकते कि आप इसकी वजह से ये sick है या इसकी वजह से ये काम पे जाना चाहता है. Means he is sick because he wants to go to work, or he wants to go to work because he is sick. So both the sentences which are named as clauses and put together to make a compound sentence. And the last one is I really need to go to work. मैं काम पे जाना चाहता हूँ, but I am too sick to drive. मैं बहुत ज्यादा okay. I think ये already हो चुका है. So extremely sorry to use these two sentences as an example here. आगे लेके चलते हैं. Compound sentences joined by adverbs. ऐसे sentences जो adverb की मदद से जोड़े गए हैं instead of conjunctions. लेके चलते हैं. वो adverbs हो सकते हैं like, so, sell, yet, indeed, however, and lot many. So let's go through the sentences examples. I was not feeling well. मैं अच्छा feel नहीं कर रहा हूँ. I took a leave for the day. I took a leave for the day. This is a related one. I was not feeling well. मैं नहीं feel कर रहा. Both the sentences are independent. ऐसा नहीं है feeling well है. इसकी खराब feeling की वजह से वो yes यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. खराब फीलिंग की वजह से ही वो लीव ले रहा है, बट आई टुक अ लीव फॉर द डे, ये सेपरेट है. एंड आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं. एंड both these sentences are joined with so. This one with so adverbial use की वजह से इनको जोड़ा गया है. आगे नेक्स्ट सेंटेंस, इट टुक्स अ प्रीटी होपलेस जॉब. Indeed, we suggested to leave it. Yes, with the help of an indeed, both these two sentences are joined. It looks a pretty hopeless job, but means indeed we suggested to leave it. Abdul kept talking in the class, therefore he got in trouble. See, he got in trouble because Abdul kept talking in the class. Both the sentences are joined, made a compound sentence, helped to make a compound sentence. And the last one is I like you a lot, in fact I think we should be the best friend. So both the sentences are I think we should. यहाँ पर भी usage है अलग अलग. I think we should be the best friend. So this too is a compound sentence used to compound both these two sentences with the help of in fact as an adverb. Okay, आगे लेके चलते हैं. कुछ वो sentences, वो कुछ ऐसे sentences जो बिना किसी adverb, बिना किसी conjunction की मदद से जोड़े गए हैं. So we shall have to correct the mistake in the program. हमको mistake ठीक करनी चाहिए जिस प्रोग्राम को हमने किया है. I am afraid, मैं डरा हुआ हूं. So I am afraid, ये सेंटेंस जोड़ा गया है, क्लॉज बनाया गया है, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो यहाँ पर दिख रहा है वी शैल से चालू करके अफ्रेड तक, ये पूरा कंपाउंड सेंटेंस है जहां पर किसी भी लिंकिंग वर्ड को नहीं यूज किया गया है टू कंपाउंड बोथ दीज डिफरेंट क्लॉजेस, चाहे एडवर्ब हो या कंजंक्शन हो. इज दैट क्लियर? Next sentence is, it is too hard to reach on time. I must have a taxi. I must have a taxi without any conjunction, without any adverb. Both the sentences are linked. What is all this ado about nothing? What is all this ado about nothing? I'm really wondered. मैं वाकई में बहुत ज़्यादा चकित हूँ इस चीज़ को जान के. So both the sentences are joined without any adverb or conjunction. And the last one is he's a nice man. He's a nice man. Don't you think? क्या आप नहीं सोचते? So दोनों ही sentences जोड़े गए हैं. Both the sentences जो clauses हैं जोड़ने के बाद पहले sentences हैं. If you are talking about this sentence independently, this is a complete sentence. But when it is not the part of this complete one, if you are saying I don't you
Don't you think if you are like speaking or writing this sentence separately, it is one sentence, but when you are making this sentence as a part of this complete sentence, this one where I'm moving our cursor, so it is a clause. So both the different clauses are joined without any conjunction or what, adverb. Let's move ahead to the last slide of this video. I know this is too much, थोड़ा सा बर्डन जरूर पड़ा होगा, लेकिन प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो लॉट मेनी टाइम्स, a bit more number of times, थोड़ा सा ज्यादा इसे समझिएगा ताकि थोड़ा सा इजीली समझ में आए. ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसा कि मैंने बोला था, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ऑल अबाउट कंसिस्टिंग वन मेन क्लॉज एंड वन और अ मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज. एक सहायक क्लॉज और एक मेन क्लॉज. मेन क्लॉज मींस बिकॉज ऑफ दैट subordinate clause came into the picture. Because of the main clause, subordinate clause came into the picture. Main clause की वजह से subordinate clause picture में आया. It is a complex sentence. Okay, so let's understand some of the sentences. Because my coffee was too cold, मेरी कॉफी बहुत ज़्यादा ठंडी थी. I heated it in the microwave. So both the sentences are dependent on one another. This is the main clause and I heated it in the microwave. This is the subordinate clause. Although he was wealthy, वो बहुत ज़्यादा rich है, then too he was unhappy. Rich होने के बावजूद वो unhappy है. Then too he was unhappy. वो तब भी unhappy है. This is a formation of complex sentence. Okay, where one sentence is main clause, second one is subordinate one. Sorry. Okay. He was unhappy although. Okay, that's. Okay. Next one is he returned the computer after he noticed it was damaged. उसने कंप्यूटर लौटा दिया. He returned the computer after he noticed it was damaged. उसने पाया वो कंप्यूटर खराब है इसलिए उसने लौटा दिया. He returned the computer. ये main clause हो गया and the rest one is the subordinate clause and the last one is whenever price goes up. जब भी कभी प्राइस ऊपर जाता है कस्टमर buy less products. लोग वह कम प्रोडक्ट खरीदते हैं. So these were some of the examples of complex sentences. I know this is a bit lengthy video, but it was the need of. I cannot like stop myself to stop explaining in between of any of these contents. ये मजबूरी थी simple, compound और complex sentences को तीनों को एक साथ बताने की. It was not I was not finding myself appropriate enough to stop in between with only simple or with simple and a compound or complex sentence. Okay, so it was a need to explain these all three in one go. So thank you very much to be with me. Okay, so please go through this video so that you can get to know more and more about it. If any doubt is there in your mind, please leave your comments properly in the comment section. Thank you very much. Bye bye. Take care of your family as well.